तो ये टिकट काउंटर है जहाँ से हमें टिकट मिलनी है। और यहाँ पे हमारे एक दोस्त हैं अली हसन भाई, इनसे पूछते हैं कि कैसे हमें टिकट मिलेगी और क्या तरीक़ेकार है। ये अल्लाह का शुक्र है अपना ऐसा। जी भाईजान, मुझे थोड़ा सा गाइड कर दीजिएगा क्या तरीक़ेकार। जी जी सर, ये बेसिकली हमारी TVM मशीन है जिसका मतलब है टिकट वेंडिंग मशीन। इसमें से हम बेसिकली टिकट्स अपने ले सकते हैं और अपना कार्ड भी रिचार्ज कर सकते हैं। टिकट लेने के लिए क्या है कि यहाँ पे उन्होंने फौरी टिकट लिखा हुआ है RS 40। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके आगे ऑप्शन आ जाएगा आपने कितने टिकट्स लेना चाहते हैं। आप एक वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा 6 टिकट्स ले सकते हैं। जैसे आप जितनी टिकट्स लेना चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे। ये आपका कैश बॉक्स है, इसमें आप अपना कैश डालना शुरू हो जाएंगे। जैसे कैश पूरा होगा मशीन मज़ीद कैश नहीं लेगी और नीचे आपके टिकट्स आना शुरू हो जाएंगे और जो आपके बकाया पैसे हैं वो भी कैश बॉक्स के निचले हिस्से से बाहर आ जाएंगे। बस ये सिंपल प्रोसेस है टिकट लेना। और कार्ड का तरीक़ेकार क्या है वो भी काइंडली मुझे थोड़ा सा बता दें। कार्ड ये है कि मेन पेज पे आप देखेंगे तो सिंपल लिखा हुआ है रिचार्ज का ऑप्शन। रिचार्ज के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, ये बना हुआ है कार्ड होल। इसमें आप अपना कार्ड इंसर्ट कर देंगे। जैसे आप अपना कार्ड इंसर्ट करेंगे आपका बैलेंस यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, फिर जितने आप पैसे ऐड करते जाएंगे वो कार्ड में डायरेक्ट ट्रांसफ़र होते जाएंगे। और कार्ड इजीली बन जाता है कोई? जी जी, कार्ड इजीली बन जाएगा। कार्ड आपको यहाँ से बन जाएगा? जी, कार्ड वो बूथ है वहाँ से बन जाएगा आपके पास। कैश बॉक्स है, इस पर आप क्या करेंगे अपने पैसे एंटर कर देंगे। जो आपका टिकट है वो आपको नीचे से मिल जाएगा। और ये आपके ये तो करप्शन रोकने के लिए भी काफ़ी मुफीद तरीक़ेकार है। जी ऐसे ही है। वैसे भी यहाँ पे जो हमारा बूथ है, जो वहाँ से भी अगर आप टिकट लेते हैं तो वो भी बेसिकली कंप्यूटराइज ही है। आप ये नहीं कर सकते कि अगर आपका कोई भाई आ गया, दोस्त आ गया तो आपको उसको मुफ्त में टिकट दे दो। आप बेसिकली जब भी उसमें से टिकट निकालोगे, चार्ज करोगे तो वो कंप्यूटर में कैश जाएगा ही जाएगा, फिर चाहे आप उसको जिसको मर्जी दे रहे हो। तो इसलिए करप्शन वाला मशीन यहाँ पे